Hello guys, welcome back and this is the 15th chapter in our Java complete course called escape sequences. ये काफी इंटरेस्टिंग है. Let's see. So basically escape sequence होता है. Escape sequence होता है basically a special character combinations, okay, in Java that start with a backslash followed by a specific character, okay, used to represent characters that cannot be typed directly into a string such as the newlines, tabs or quotation marks. तो फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि हमारी स्ट्रिंग कुछ ऐसे दिखती है. लेट्स से हेलो वर्ड, राइट, इस तरीके की स्ट्रिंग है हमारा. तो अगर मेरे को कुछ ऐसा प्रिंट करना होता, लेट्स से हेलो अंकित, ठीक है, अपने को कुछ ऐसा प्रिंट करना था. तो अब इसको मैं स्ट्रिंग में कैसे डालूं, है ना. तो दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन बाय द एस्केप सीक्वेंसेस. Now what we can do, we can straight away jump between examples and let's see ये काम कैसे करता है. So I'll remove myself so we can focus more on the code. Okay, so first thing is let's say कि मेरे पहले अपन ने बताया कि अपने को एक let's say एक मैसेज है, ठीक है. मैसेज इज दिस थिंग. सो हेलो हेलो एंड देन आई वांट दिस टू बी प्रिंटेड, राइट, अंकित. तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे ना, ये कंपाइलेशन एरर आ रही है बिकॉज यहाँ पे ही अपना ये स्ट्रिंग एंड हो गया, राइट. बट व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज दिस एस्केप सीक्वेंस और बैकस्लैश का यूज करके अपन इसको बोल सकते हैं कि भाई इसके बाद जो ये है ना, इसको बेसिकली हमें एस्केप करना है. सो दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज दिस टू टुगेदर कॉम्बिनेशन इज टर्म्ड एज एस्केप सीक्वेंस. अगेन यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे भी हम इसको भी एस्केप कर सकते हैं. एंड देन व्हाट विल हैपन इज कि ये बंदा बोलेगा कि भाई इसके बाद जो कैरेक्टर है उसको भूल जा, बस प्रिंट कर देना सीधा सीधा, उसको ध्यान मत. सिमिलरली दिस गाय विल आल्सो से दिस कि इसके बाद जो कैरेक्टर है उसको भूल जा, बस सीधा सीधा प्रिंट कर दे. ठीक है. तो अब क्या हुआ, ये जो स्ट्रिंग है इसके एंड कोड ये रहा, इसका स्टार्ट कोड ये रहा, ठीक है. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज एस्केप सीक्वेंस. अभी मैं इसको अगर प्रिंट कर, ठीक है, इफ आई प्रिंट मैसेज हियर, तो अपना वो आ जाएगा बेसिकली हेलो अंकित, और अंकित इज सराउंडेड बाय डबल कोट्स. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल बेसिकली एस्केपिंग, और बेसिकली वी कैन कॉल दिस if I want to escaping double quotes. Okay, let's talk about another example where what we can do, we can, if someone wants to escape the backslash itself, right, backslash हमें क्या देगा कि escaping sequence में हमारा जो backslash है, ठीक है, that is the first character and then whatever character after this is kind of escape, right. लेकिन अगर मुझे backslash ही escape करें तो कैसे करेंगे. तो let's call this escaping backslash. और आपने देखा होगा, राइट, आपके विंडोज में पाथ कैसा होता है. विंडोज में पाथ कुछ ऐसा होता है, सी देन दिस देन प्रोग्राम फाइल्स एंड देन व्हाट एल्स वी हैव, लेट्स से वी हैव जावा एंड देन वी हैव जेडीके, सॉरी बैकस्लैश एंड देन जेडीके. तो अगर मेरे को ये प्रिंट करना है तो कैसे करूँगा. लेट्स मी कॉल दिस स्ट्रिंग व्हेन पाथ इज इक्वल टू, इफ आई राइट दिस, सो दिस देन एस्केप then program slash over then files space then java then jdk. पर एक्चुअली यहाँ पे एरर दे रहा है, राइट, बिकॉज दिस इज बेसिकली एस्केप सीक्वेंस, राइट. बट दिस एस्केप सीक्वेंस, बट ये बैकस्लैश इट डजंट मीन एनीथिंग इन एस्केप सीक्वेंस, राइट. सो व्हाट वी कैन डू, वी वांट टू प्रिंट दिस स्लैश. तो आप क्या कर सकते हैं, भाई तू इसको एस्केप कर रहा है, सो दिस टुगेदर इज एन एस्केप सीक्वेंस. और ये क्या करेगा, इसके बाद वाला जो कैरेक्टर उसको भूल जा और जैसा कहता है वैसा ही प्रिंट करते हैं. सिमिलरली हियर वी कैन डू आल्सो दिस एंड देन दिस. नाउ इफ आई प्रिंट दिस, सो व्हाट विल हैपन व्हेन पाथ, लेट्स प्रिंट दिस, और ये हमारा ये पाथ ऐसा प्रिंट हो गया, ठीक है. दिस इज अनदर थिंग. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज बेसिकली अगर हमारे पास एक सेंटेंस है, उसमें अगर हमें न्यू लाइन प्रिंट करना है, राइट, सो लेट मी कॉल दिस न्यू लाइन, और फिर अपन करते हैं स्ट्रिंग story is equal to hello, sorry, this is a story about a king and queen, okay. And then what I'm going to do, मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसमें ही एक नया लाइन डालना चाहता. तो अभी मैं अपने को तो कुछ नहीं पता ना कि इसमें नया लाइन कैसे डाल सकते हैं, राइट. तो बेसिकली किंग wins at the head, ठीक है. तो हमारी स्टोरी हो रही है, यहाँ पे मैं आप एक नया लाइन डालना चाहते थे. We can do this with escape sequence by using a backslash and an n. So basically this is what it represents a new line thing, okay. तो बेसिकली ये क्या करेगा, एक नया लाइन डाल देता है स्ट्रिंग में. तो ये जैसे ही पहला लाइन ये होगा, उसके बाद फिर एक न्यू लाइन डाल देगा, और फिर सेकंड लाइन विल स्टार्ट विद दिस. सो लेट मी प्रिंट दिस क्विकली. सो लेट्स प्रिंट स्टोरी, और अभी हम इसको रन करेंगे.
So you will see that these two will be printed in different lines. ठीक है, ये पहली line और ये पर दूसरी line. Another thing we can do is tab, right? So हमें basically in between our in string we want to print a tab basically. So we can do that also. So string text is equal to hello, and for that we can use backslash and t, and hello what. So let's print this. So string in text. तो इसको हम प्रिंट करेंगे तो देखना हेलो वर्ड के बीच में टैब प्रिंट हो जाएगा. तो बेसिकली क्या मोटा मोटी कैरेक्टर मतलब ये कि जो स्लैश एंड देन सम कैरेक्टर स्पेसिफिक कैरेक्टर इज व्हाट वी कॉल एज बैक स्लैश एंड सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, दिस टुगेदर इज कॉल्ड एज एन एस्केप सीक्वेंस. ओके, वन मोर थिंग, अगर हमने कैरेक्टर्स के बारे में देखा था, तो अगर मैं ये कैरेक्टर किसी वेरिएबल में असाइन करा तो मैं कैसे करूँगा. वे वी कैन डू दिस इज लेट्स से कैरेक्टर सिंगल कोट आई थिंक, लेकिन सिंगल कैरेक्टर तो हमारा ऐसा होता है लेकिन उसके बीच में एक ये कैसे डालो, राइट, दिस इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पे ये हमें चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एस्केप कर सकते हैं एंड देन दिस पिक से द थिंग दैट यू आर डिस्कसिंग एरिया कि इसके बाद जो है उसको बस भाई एस्केप करते हैं. अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो वी विल हैव सिंगल कोट कैरेक्टर एंड वी विल बी एबल टू गेट अ सिंगल कोट एज अ कैरेक्टर. So this was about escape sequences. Once again, escape sequence क्या होता है? Escape sequence basically they are special character combination in Java that start with a backslash and then followed by specific character. ठीक है? That is about this video, guys. Let me quickly copy this code और इसको हम अपने notes में डाल देते हैं ताकि आप इसमें और practice कर सको. And we paste this. Okay, so now we can print it. And that is it for this video. See you guys.